Assalamu alaikum everyone. Uh, in previous video we have discussed about the basics of coordinate geometry जहाँ पर हमने कुछ basic formulas को explain किया था by using just the variables और उसमें we have not solved any questions in that video and हमने ये बात की थी कि इसको questions जो हैं वो हम अगली दूसरी वीडियो में explain कर लेंगे. So this video is again in the progression of the previous one, where we are going to solve now the questions from the past papers. This first question is from October-November 23, paper 2-2, and it is question number 7. You can see that in this question we are given some graph of a line where we have points A and B. The coordinates of point A is -4 and 1, and coordinates of point B is 1 and 4. Point A and B are shown on the centimeter grid, square grid. ABC is a triangle. Here are 5 possible coordinates for point C. और यहाँ पर आपके पास 5 कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं. टेक द 2 कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द लिस्ट दैट मेक ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. यहाँ पर देखो, मेरे जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना कि हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो अ स्टूडेंट मे थिंक कि वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड वेयर द डिस्टेंस मैच वी विल से दैट ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है. लेकिन व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व कि ये क्वेश्चन जस्ट 2 मार्क्स का है, तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बजाय हम इसको अपनी ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा और टाइम टेकिंग भी नहीं होगा. सो look at this. First point is -2 and 4. -2 and 4 will be this location, or -2 and -1 would be this location, and -1 and -2, -1 and -2 is here, and 6 1 is at this location, and -4 6 is here. So we have plotted all these 5 points. यू मे हैव द स्केल. मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हमें 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो हम इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन को बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस फार्मूला और बाय यूजिंग एनी अदर टेक्निक हम इसको नहीं करेंगे. इस पे ज़्यादा टाइम या ज़्यादा मेहनत जो है ना वो आपकी नहीं होनी चाहिए. So just by using the scale, you can find out the distance between AB and distance between B and this point, or you would see that these two distances are same. So first point is -2 and -1, जो हम यहाँ पे टिक कर देंगे. Then we have to look at any other point, because it was given that you have to select 2 points. So look at this 6 and 1. This अगर हम B को इस point के साथ join कर देते हैं, then it will be evident that this is an isosceles triangle and these two lengths are same. So 6 and 1 will be the second point, और यहाँ पर आपने just ये 2 points को टिक करना था, and this question is done. Now find the column vector AB. अब ये column vector AB we need to find. It's the concept of the vectors, but as we are working in coordinate geometry, or आपको you know well that in examination there are structured questions where different concepts or different topics are embedded into each other. So हम इस question को भी directly कर लेंगे. To find the column vector from A to B, you have to count that how many coordinates along x-axis you have to walk, and then how many coordinates axis you have to walk for y-axis. So 1 2 3 4 5 and 1 2 3. So in this part you just have to write, just let me go there. I don't know what's happening. Yeah, here हमारे जो along x axis coordinates आए थे वो 5 थे, और along y axis that was 3. So 5 and 3 is the column vector AB. Now for part 3, A is the midpoint of line DB.
find the magnitude of dB. In previous video, I told you about these two bars. It's a distance formula, distance function, which shows that it will be a positive value, always positive value. And finding dB, keep in mind that it is just like a line that here we have D and here we have B, and this is point A in between them, because A is the midpoint of line DB. सो इफ़ यू हैव द कोऑर्डिनेट्स एज इन दिस क्वेश्चन, अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ दोबारा, वो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे कोई ना कोई, एंड हमारे पास बी के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। पॉइंट डी वैसे दिया हुआ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सो व्हाट वी विल डू दैट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2। Now, moving back, we are going to find out the coordinates of A, which are -4 and 1, or coordinates of B, which are 1 and 4. -4, 1, and 1, 4. So, moving to that part again. A is -4, 1, and B is 1, 4, and we need to find the distance between A and B as mentioned in this diagram which I have drawn. Let's clear some space and then do the working. So for dB, first of all, we are going to find the distance between AB, and this is equal to square root of it should be -4 minus 1 whole square, plus it should be 1 minus 4 whole square. And what we get here is -4 minus 1 is 5, minus 5 square is 25, plus 1 minus 4 is minus 3 square is 9. So 25 plus 9 is square root of 34, or by using the calculator, you can do just 2 times square root of 34, or iski value, let me find out by using the calculator. We get 11.66, or you can write this to be 11.7, और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इसको 2 decimal places तक आंसर को ही लिखें. Now B part, we have the equation of the line P, which is y equals 4x minus 3, 4x minus 3, और the line L is perpendicular to line P. यहाँ पर आपको याद होगा हमने ग्रेडियंट्स की बात की थी कि अगर देखेंगे लाइन इसका लाइन P का जो ग्रेडियंट है दैट इज 4, m इक्वल्स 4 हियर, तो लाइन L जो होगी ये है P के लिए, और लाइन L के लिए हमारे पास ग्रेडियंट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा, m equals -1/4 it should be. The line L passes through the point 6 and 4. Find the coordinates of the point where line L crosses the x-axis. Now, to find this, that where line L crosses the x-axis, first of all, we need to find the line L. So it is the first case which in previous video we have discussed about different cases to find the equation of the straight line. So we are given the gradient m equals -1/4, and the point which is 6 and 4, 6 and 4. Equation of the line L will be y minus y1 equals m into x minus x1. और ये भी बात हमने की थी कि जो y1 और x1 लिखे हुए हैं, इट इज़ जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि हमने वैल्यूज़ इसकी x की और y की कहाँ पर इंसर्ट करनी है. ये जो y है और ये x विदाउट द साइन 1, इनमें हमने कोई वैल्यू नहीं लगानी. सो y माइनस y1 की जगह पर आप 4 लिख देंगे. दिस इज इक्वल टू m इज -1/4 into x minus x1 is 6. So what we can do is, now this 4 can be multiplied on the other side. It will become 4y minus 16 equals minus x plus 6, and hence we have 4y plus x equals 16 plus 6 is 22. This is the equation of the line L. अब हमने फाइंड ये करना था कि where the line L crosses the x-axis, find the coordinates of the point. Now, a very important thing which you need to remember, just a second.
या बट आई वाज गोइंग टू टेल यू कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मौजूद हैं और यहाँ पर देखें कि ये वाली जो इक्वेशन है इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आता है, तो वो हमने एम इक्वल -1/4 फाइंड भी किया, तो ये लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स बनेगी इस तरीके से। और वी नीड टू फाइंड कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है लाइन। So it is evident from this diagram that at all the x-axis y is equal to 0. Whenever you need to find the x-intercept, you have to use y equals 0 in the given equation. Or if you need to find the y-intercept, you will put x equals 0 in this same equation. So here x-intercept find करना है हमने, तो x-intercept के लिए y must be equal to 0. 4 times 0 plus x equals 22 and hence x equals 22. अब देखिए आपके पास x की वैल्यू 22 आई और इसके अगेंस्ट y की वैल्यू वो जो आपने पहले कंसीडर की थी y equals 0. सो ये वाला पॉइंट हमारा 22 and 0 बन जाता है। Moving to the next question, question number 3, the equation of the line L is 4y equals x minus 5 and find the gradient of the line L. That's very simple. Whenever you are given the equation of the line, just make y the subject of the formula. Y equals x over 4 minus 5 over 4. ये जो 4 है y के साथ, it will be divided on the other side and we get x over 4 minus 5 over 4. The same equation can be written as 1 over 4x minus 5 over 4. तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ये शो करती है कि x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो भी कांस्टेंट है दैट इज द ग्रेडियंट। सो x के साथ हमारे पास 1/4 है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L इज 1/4। इट्स अ क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन, तो आपके सामने ही है कि इसकी वर्किंग जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए और इसका पार्ट ए का भी सेकंड पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन एल क्रॉसेस द वाई एक्सिस। अगेन अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर किया था कि जब हमारे पास हमने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है लाइन, तो हम वाई को 0 पुट कर देते हैं। बट in this part we are going to find out where the line L crosses the y-axis. So for that purpose you will be putting x equals 0, और अगर हम इस इक्वेशन में x 0 पुट करते हैं तो 4y equals 0 minus 5, we get 4y equals -5 and y is equal to -5/4 और हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 and -5/4। Okay, now moving to part B. A is the point 4, 5 and B is the point -2, 8. Find the length of line AB. I guess that we don't need to solve this question. You just need to put the formula AB equals square root of 4 minus -2 is 4 plus 2 whole square plus 5 minus 8 whole square, and you can solve it easily by yourself. Moving to the next part, we have find the equation of line AB. Give your answer in the form of y equals mx plus c. अब ये हमारी पिछली वीडियो में जो हमने एक लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि हमारा जो अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी हो और दो पॉइंट्स गिवन हो तो फिर हम क्या करते हैं। So you can see we have point A which is equal to 4 and 5 and point B which is equal to -2 and 8. First step is to find their gradient. So gradient is equal to yeah, we have to find out y2 minus y1. y2 is 8 minus y1 is 5 divided by x2 is -2 and x1 is -4. So 8 minus 5 is 3 and -2 minus 4 is -6. We get -1/2 as the gradient of this line AB. And now you have the gradient y equals -1/2 and you can use any one of these two points a और b में से कोई सा भी पॉइंट आप यूज कर लेंगे इन इक्वेशन y minus y1 इक्वल्स m इंटू एक्स माइनस x1। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये y1 और x1 जो हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, ये सिर्फ इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम करते हैं कि हमने इन वेरिएबल्स में वैल्यूज पुट करनी है। बाकी
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि y1 और x1 की जगह पे आप हमेशा a की ही वैल्यूज़ पुट करें, आप b की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर। So using b in this case, y minus y1 is 8 equals m, which is minus 1 over 2, and x as it is minus x1 की जगह पर हम minus 2 पुट करेंगे तो minus minus plus 2 हो जाएगा ये। Now solving this we get y minus 8 equals negative 1 by 2x and negative 1। ये 1 by 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाता है और नेगेटिव साइन इसका, और minus 8 will be shifted to the other side, so y equals minus 1 over 2x, minus 1 plus 8 is minus 7, so your answer is minus 1 over 2x minus 7. This is of the form y equals mx plus c। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इट इज़ अक्टूबर नवंबर 22 और पेपर 21। P is the point R4 and Q is the point TU. The midpoint of the line PQ is 1, 3. Gradient of the line PQ is minus 1, 4. Find the value of each of R, T and U. It is a very interesting question. यहाँ पर आपके बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटी इसमें ये होगी कि आप इनकी इक्वेशंस जो बनती जाएंगी उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि p की जगह पर हमारे पास r और 4 मतलब एक वेरिएबल p में मौजूद है और q जो है वो दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं। सो व्हाट डू डू? सबसे पहली चीज देखें, क्वेश्चन आपको खुद बता रहा होता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू इज 1 3। So first of all, you are going to use the formula of the midpoint, which was x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. Putting the values of midpoint for PQ, देखें P और Q के midpoint में हमारे पास values आएंगी x1 is R and x2 is T. R plus T divided by 2 and y1 plus y2 means 4 plus u divided by 2, or this must be equal to the midpoint given, which is 1 and 3. Here you can do that। एक चीज़ आपको और मैं बताता चलूँ कि if somehow we have a point A and B equal to point X and Y, then it is only possible if A is equal to X and B is equal to Y। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होना चाहिए। सो अज्यूमिंग दिस, अगर यहाँ पर हमारे पास इक्वल साइन है, it means r plus t divided by 2 must be equal to 1 and hence r plus t is equal to 2. This 2 will be multiplied here. R plus t equals to, let's say that this is equation number 1. Now 4 plus u divided by 2 equals 3. This 2 will be multiplied here. We get 4 plus u equals 6 and hence u is equal to 6 minus 4. We get 2. ये हमारे पास इक्वेशन बनने के बजाय एग्जैक्ट वैल्यू निकल आई है, u equals 2. ओके, नाउ वी हैव द अदर इक्वेशन r plus t equals 2. अब हम देखते हैं कि हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी। द ग्रेडियंट ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 over 4. Putting the formula for the gradient, m is equal to y2 minus y1. y2 is u, y1 is 4. u minus 4 divided by x2 minus x1, that is t minus r, and the value of m was minus 1 over 4. So this is equal to minus 1 over 4. Or let me erase this now. You can understand easily what we are going to do now. u minus 4, यहाँ पे देखें u की वैल्यू 2 आती है, so 2 minus 4 we get right, just 2 minus 4 over t minus r equals minus 1 over 4. Just borrow some space here and we have negative 2 over t minus r equals negative 1 over 4. This negative sign will cancel here. We get cross multiplication, 4 2s are 6, t minus r equals 6. This is your second equation. Now look at the first equation and second equation, we get the simultaneous equations. Now you see that how beautifully
इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में साइमल्टेनियस क्वेश्चंस को भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को भी एम्बेड कर लिया। सो एज एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो r प्लस टी के बजाय हम लिख सकते हैं t प्लस r इक्वल्स टू, and this second equation says t minus r equals 6. Now adding these two equations, we get this cancelled and we get 2t equals 8, and hence t is equal to 4. Now t is equal to 4. We get u equals to t equals 4, and using this value in equation 1 or equation 2, we get r plus, I'm using in equation 1, r plus 4 equals 2, and r is equal to 2 minus 4 is negative 2. This is our third value. So r equals negative 2, t equals 4, and u equals 2. सो अब यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हमने ऑलमोस्ट हर तरह के वो केसेस डिस्कस किए जो हमने प्रीवियस वीडियो में सोचा हुआ था कि ये हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके CIEs के एग्ज़ाम में इनके अलावा या इस स्टाइल के अलावा बहुत ही आई डोंट थिंक कि मतलब इससे ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएट होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टेटमेंट इज़, और उसके बाद आपने सॉल्व करने से पहले गिवन मार्क्स को भी देखना है, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको कितनी वर्किंग करनी है, और गिवन मार्क्स आपको आइडिया भी दे सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। So I hope that this video is useful for you people to understand the coordinate geometry and the basic concepts, how different statements lead to different ways of thinking. And अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नया लेकर आएंगे। Until next time, thank you very much. Allah Hafiz.